अब न्यूमेरिकल्स पे तो आपने पीएचडी कर ली है। हर टाइप के न्यूमेरिकल हमने कवर कर ही लिए हैं। एक और असाइनमेंट आपके साथ शेयर हो जाएगी। थ्योरी थोड़ा सा इक्विलिब्रियम में आज वो भी खत्म हो जाएगा। चैप्टर 8 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है 7 और 8 हमारे क्लोज हो जाएंगे आज। ओके, इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। बट कुछ टर्म्स हैं इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, ग्राफ्स इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, वो हम करेंगे अभी। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म के मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए। एक्स एंटे, एक्स पोस्ट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस, एडी इज सी प्लस आई, एएस इज सी प्लस एस। तो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन savings are equal to investments or investments are equal to savings. But ये ex ante, ex post, ये क्या होता है? Ex ante variable is a planned or expected value of a variable. Ex ante, ante, before the event. Planned. How much do you plan to save? How much do you plan to invest? Ex ante, planned or expected value. Whereas ex post, post the event, actual. Ex post variable is the actual or realized value of the variable. Both these terms are generally used in context of saving and investment. There are two aspects of saving and investments: ex ante saving and ex ante investment, ex post saving and ex post investment. तो बेसिकली सेविंग्स एक्स एंटे भी होंगी, एक्स पोस्ट भी होंगी। इन्वेस्टमेंट एक्स एंटे भी होगी और एक्स पोस्ट भी होगी। एक्स एंटे क्या है? व्हाट यू प्लान टू डू। एक्स पोस्ट व्हाट एक्चुअली हैपेंस। एक्चुअल डेटा, एक्चुअल सेविंग्स, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, रियलाइज्ड और एक्स पोस्ट। व्हाट यू प्लान टू सेव, व्हाट यू प्लान टू इन्वेस्ट, ex ante, planned. Ex ante saving and ex ante investment. It refers, ex ante saving, it refers to the amount of savings which households or savers plan to save at different levels of income in the economy. Ex ante saving or planned saving is given by the saving function or propensity to save. तो हम जो सेविंग कर रहे थे वो कौन सी बात कर रहे थे हम? प्लान्ड सेविंग्स की, एक्स एंटे सेविंग्स। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच द फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। तो ये उन्होंने एक बेसिक अजम्पशन ली कि सेविंग्स किसका काम? हाउस होल्ड का। इन्वेस्टमेंट किसका काम? फर्म्स का। द अमाउंट ऑफ एक्स एंटे और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज डिटर्मिन्ड बाय द रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिमांड and the rate of interest. वो तो MEI हमने कर ही लिया कि what factors affect the investment, that is the MEI, rate of interest, वो सारी चीजें अलग हैं. Meaning of ex ante investment, what the producers plan to invest at different levels of income in the economy. Ex ante can also be termed as intended, planned, voluntary or desired. तो एक्स एंटे का मीनिंग क्लियर है? एक्स पोस्ट, एक्स एंटे मीनिंग क्लियर है? यस सर। ओके। इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कब होगा? जब एक्चुअल सेविंग्स आर इक्वल टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स? नो, व्हेन द प्लान्ड सेविंग्स आर इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन द एक्स एंटे सेविंग्स, प्लान्ड सेविंग्स are equal to planned investment. What you plan to save is equal to what the producers plan to invest. In an economy, equilibrium is determined when the planned saving is equal to planned investment. However, both these concepts are equal only at equilibrium level of income. सिर्फ equilibrium के time ये दोनों equal होते हैं. It happens because of three reasons.
Generally, saving is done by the households and investment is done by the firms. So the savers and investors are different people with different priorities. As an individual, as a household, आपकी priorities काफी अलग हैं. आपका purpose है profit अपना to maximize your satisfaction through consumption of goods and services and to save for your future. As a producer, आपका है profit maximization. सबकी priorities अलग अलग हैं. Household हो या producers हो. Saving is made in small amount and investment is made in big amounts. Saving is made for meeting future uncertain events or contingencies, whereas investment is made for profit motive. So savings हम क्यों कर रहे हैं? To again plan for your future, to meet future uncertain events. Investment is for profit motive. As a result, ex ante planned savings and ex ante planned investment are not always equal to each other. They are equal only at the time of equilibrium, only at the equilibrium level. Ex ante variables, they form the basis of the theory of national income determination. So equilibrium will be determined on the basis of these planned savings and planned investments, ex ante variables. When ex ante or planned saving is not equal to ex ante investment, then output will tend to adjust itself till both of them become equal again. तो यही तो हम सीखेंगे अभी equilibrium में कि कैसे how does the nation determine its equilibrium or restore its equilibrium if they are not at equilibrium. तो ex ante planned savings, planned investments, ex post actual savings or realized savings, actual investment or realized investments. Ex post saving, it refers to the actual or realized saving in an economy during a year. Ex post or actual saving is the sum total of planned saving and unplanned saving. Ex post investment, it refers to the realized or actual investment in an economy during a year. Ex post or actual investment is the sum of total planned investment and unplanned investment. Actual, what you plan to invest और unplanned investment कितनी हो गई, तो उसका जो टोटल है वो हो गई आपकी actual investment. If actual investment is less than the planned investment, तो unplanned investment negative value हो जाएगी. Ex post investment, actual investment. Ex post savings, actual savings. कितना आपने जनरेट करा, कितना आपने इनकम जनरेट करी, इवेंचुअली जो एक्चुअली सेव करोगे वही बैंक्स में जाएगा, वही बैंक्स आगे लोन्स देंगे, वही प्रोड्यूसर्स आगे इन्वेस्ट कर पाएंगे. तो एक्चुअल सेविंग्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट मस्ट बी नोटेड दैट एक्सपोज सेविंग एंड एक्सपोज इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल एट ऑल द लेवल्स ऑफ इनकम. तो ये इक्विलिब्रियम डिटरमिन नहीं कर सकते एक्चुअल सेविंग्स और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स. जो इक्विलिब्रियम डिटरमिन कर रहे हैं वो कौन से हैं? एक्स एंटे प्लान्ड सेविंग्स और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स. जब वो इक्वल होंगे, व्हाट यू जितना आप सेव करना चाहते थे उतना ही वो इन्वेस्ट करना चाहते थे, जब वो इक्वल है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है. कह रहे एक्चुअल तो हमेशा इक्वल होगा. एक्सपोज सेविंग्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू एक्चुअल एक्सपोज इन्वेस्टमेंट्स. This equality between the two is brought by the fluctuations in income. Income level change होगा, बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी, सेविंग्स बढ़ेंगी, बैंक में आप ज्यादा डिपॉजिट करेंगे, ज्यादा डिपॉजिट करेंगे, बैंक आगे ज्यादा लोन दे पाएंगे और वो ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे प्रोड्यूसर्स. तो planned value of the variables are their ex ante measures, whereas realized value of the variables are ex post measures. The significance of distinction between ex ante and ex post is that all the variables in the theory of income determination are ex ante variables. Ex ante variables forms the basis of theory of national income determination. तो जो भी इक्विलिब्रियम स्टडी होगा उसमें अगर मैं लिखूंगा सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो कौन सी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है? प्लान, एक्स एंटे या रियलाइज्ड ex post? Planned.
planned or ex ante.